Measures of central tendency for a given set of observations measures the scatterness of the observations. ये गलत ऑप्शन है because scatterness हम measure करते हैं using measures of dispersion. Option B है the central location of the observations. Yes, this is the correct answer. So measures of central tendencies measures the central location of the observations. While computing the arithmetic mean from a grouped frequency distribution, we assume that the classes are of equal length, the classes have equal frequency, all the values of a class are equal to the mid values of that class या none of these. अब जब भी हम ग्रुप्ड डेटा का एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एंट्री आती है क्लासेस की और ये क्लासेस को हम कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यूज में. करेक्ट. सो द क्लासेस आर कन्वर्टेड टू मिड वैल्यूज. सो इसीलिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑल द वैल्यूज ऑफ अ क्लास आर इक्वल टू द मिड वैल्यूज ऑफ दैट क्लास विच इज ऑप्शन सी. Which of the following statements is wrong? Mean is rigidly defined. This is true because एक data set का एक ही unique mean होता है. So this is true. Mean is not affected due to sampling fluctuations. This is false. Sampling fluctuations से mean affect होता है. Mean has some mathematical properties. Yes, we can obtain the combined mean या pooled mean of two or more groups. तो ए और सी तो करेक्ट है. तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी. मीन इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस. Which of the following statements is true? Usually mean is the best measure of central tendency. Yes, this one is true. Median is the best measure of central tendency. No, because ये सिर्फ central value, ये positional average है, तो ये सारे observations को consider नहीं करता है. Mode भी एक positional average है, तो ये दो तो best averages नहीं है. एंड ज्योमेट्रिक मीन सिंस इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है और इसका कैलकुलेशन भी डिफिकल्ट है इसलिए दिस इज नॉट द बेस्ट मेजर. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. मीन इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अब यहाँ पे जो ये मीन की बात हो रही है दैट दे आर रिफरिंग टू इज द एरिथमेटिक मीन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. For open-ended classification, which of the following is the best measure of central tendency? अब जब भी open-ended classification होता है, we prefer a measure which is based on quartiles, and we know that median is nothing but the second quartile. So yes, the correct answer is option C, median. The presence of extreme observations does not affect AM, median, mode या any of these. अब एक्सट्रीम वैल्यूज यानी एकदम ही कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई अगर डेटा में उसे भी हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं या एकदम ही कोई लार्ज ऑब्जर्वेशन आ गया उसे भी हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं. और एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट मीडियन पे नहीं होता है बिकॉज मीडियन इज नथिंग बट द मिडल मोस्ट वैल्यू. सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, median. In case of an even number of observations, which of the following is the median? Now we know that when number of observations is even, then median का जो formula होता है वो है n by 2 observation plus n by 2 plus 1 observation divided by 2. यानी कि it is the simple average of the middle most two values. जो सेंटर में दो वैल्यूज हैं उनका एवरेज वैल्यू होता है मीडियन. तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. The most commonly used measure of central tendency is AM, median, mode, both GM and HM. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, arithmetic mean. So AM is the most commonly used measure of central tendency.
Which one of the following is not uniquely defined? मीन, मीडियन, मोड या ऑल ऑफ दीज? इसका सही आंसर है मोड, बिकॉज एक पर्टिकुलर डेटा सेट का एक से ज़्यादा मोड भी एग्जिस्ट हो सकता है. सो द डेटा कैन बी बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, या फिर यू कैन इन जनरल से मल्टी मॉडल. सो यस, मोड इज नॉट ऑलवेज यूनिकली डिफाइंड, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोड. Which of the following measure of central tendency is difficult to compute? ऑप्शंस है मीन, मीडियन, मोड या जीएम. अब इसका सही आंसर है ज्योमेट्रिक मीन, बिकॉज इसके कैलकुलेशन में लॉग्स, एंटी लॉग्स का भी यूज होता है. एंड अगर स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फोर्थ रूट्स ये सब कैलकुलेट करना हो एक नॉर्मल कैलकुलेटर पर भी, तो भी चैलेंजिंग हो जाता है. सो यस, ये सब के मुकाबले कैलकुलेशन ऑफ जीएम इज नॉट दैट सिंपल. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ज्योमेट्रिक मीन. Which measures of central tendency is or are considered for finding average rates? Now we know that geometric mean is used to find average percentages, and harmonic mean हम use करते हैं to find average speeds या average price per unit. So basically इसका सही आंसर है option D, both B and C. For a moderately skewed distribution, which of the following relationship holds? Now we know that for moderately skewed distribution, we can use the Karl Pearson's empirical relationship, which is mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए. Weighted averages are considered when data are not classified, data are put in the form of group frequency distribution, all the observations are not of equal importance, या both A and C. अब weights हम assign करते हैं observations को to show their hierarchy और importance. तो जब observations का importance same नहीं होता है, that is when they have different amount of importance, तब हम weighted averages consider करते हैं. So yes, based on that, इसका सही आंसर है option C. All the observations are not of equal importance. Which of the following results hold for a set of distinct positive observations? यानी observations are unequal, then which of the relations is true? Now we know that for distinct positive observations, AM is greater than GM is greater than HM. अब अगर observations equal होते हैं then AM is equal to GM is equal to HM, और यहाँ अगर सिर्फ positive observations दिया होता तो ऑप्शन ए सही आंसर होता, बिकॉज पॉजिटिव में इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं. यहाँ कहा गया है डिस्टिंक्ट पॉजिटिव, यानी अनइक्वल पॉजिटिव वैल्यूज है. So AM is greater than GM is greater than HM. So the answer is option C. When a firm registers both profits and losses, which of the following measure of central tendency cannot be considered? Now losses can be considered as negative profits. तो जब भी अगर observation negative आती है तब हम geometric mean apply नहीं कर सकते, और इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योमेट्रिक मीन. Quartiles are the values dividing a given set of observations into 2 equal parts, 4 equal parts, 5 equal parts, या none of these. Now we know that there are 3 quartiles Q1, Q2 and Q3, और ये डेटा को 4 equal parts में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Quartiles can be determined graphically using histogram, frequency polygon, ogive या pie chart. Now we know that the partition values, that is quartiles, deciles, percentiles, median, इन्हें हम easily obtain कर सकते हैं with the help of ogives. Ogives are cumulative frequency curves. So yes, इसका सही आंसर है option C.
Which of the following measures possess or possesses mathematical properties? अब mathematical properties refer to कि अगर हमारे पास एक डेटा सेट का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी या पैरामीटर है और वही पैरामीटर अगर हम दूसरे डेटा सेट का भी ऑब्टेन करते हैं तो क्या उन्हें कंबाइन करना पॉसिबल है या नहीं है। मतलब अगर जब अलग अलग डेटा सेट्स को हम कंबाइन करते हैं एंड इफ वी आर एबल टू फाइंड the combined parameter value of all the data sets, then we say कि वो जो पैरामीटर है उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट होती है। एंड वी नो दैट हम एरिथमेटिक मीन कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग डेटा सेट का। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन भी हम कंबाइन कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन भी कंबाइन हो सकता है अलग अलग डेटा सेट्स का। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, all of these. So remember, mathematical properties means you can find the combined value of that particular quantity or parameter. So am, gm, hm अलग अलग ग्रुप्स के हम कंबाइन करके एक कॉमन उनका am या gm या hm ढूंढ सकते हैं। So the correct answer is all of these. Which of the following measure or measures satisfy a linear relationship between two variables? Now we know that if y is equal to a plus bx, then y bar, that is mean of y, will be a plus b times x bar. तो मीन तो सेटिस्फाई करता है इस लीनियर रिलेशनशिप को। सिमिलरली मीडियन ऑफ y विल बी a plus b times मीडियन ऑफ x। तो मीडियन भी लीनियर रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है। वैसे ही मोड ऑफ y will be a plus b into x का मोड। सो ये भी लीनियर रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। Which of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central values? अब मीन जब हम ऑब्टेन करते हैं we consider the entire data set, that is 100% of the values. Similarly मोड इवेल्युएट करते वक्त भी हम complete data set का यूज करते हैं। So it is only the median that focuses on the 50% of the values, right? And median data set का exactly the value at the middle is the median, जो 50% पे आता है उसे हम मीडियन कहते हैं। सो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी,